So in the previous class, we learned about the formatting the tables. In that, we learned first topic, that is the adding of borders and the shading in a table. We are at the different type of borders. We can add the different type of shades in the table. Then we learned that how can you apply the background in the particular table, in the particular cell, in the particular column, in the particular row. Depend on you which type of background you want to choose. There are no need to open the page. You have to just look on the screen. There are the two types of the background can add. First method is color background. Using of that, you can add in the table of colors, and graphic backgrounds. Using of the graphic background, you can add any picture or images in your table. Now we are going to learn the next topic, that is a splitting and merging cells. So anyone can tell me what is the meaning of split in your language? मैम एक बॉक्स को है ना दो बॉक्स में बांट देना. Yes, then we can divide a one box to the two box. That is called the splitting. And what is the meaning of merging? मैम 2 बॉक्स को 1 बॉक्स में कर दे. Yes, combination is a merging and division is the splitting. Remember this word. Combination means merging and division means splitting. So same thing you have to do here for the cell, particular cell, not for a table. Remember this thing. This is for a particular cell, not for a table. आप पूरे table को merge या split नहीं कर सकते. टेबल को अगर आप मर्ज कर रहे हो तो वो एक बॉक्स बन जाएगा, वो एक सेल ही बन जाएगा. So don't be merge the whole table. Just merge the two cells, two rows, two columns like that. Now let's see what is the meaning of merging. To merge cells into the single cell, step 1, select the cell to merge. Which cell you want to merge? Firstly, you have to select them. Then navigate to the table, merge cell from the menu bar. In the menu bar, there is option of table. You have to click on that and you have to merge them. The cell you have selected and merged into the single cell. This is the splitting, merging. Now, whatever is the splitting? Place a cursor in the cell that you want to be split. Here you don't have to be selected. If you are selected, that is also okay. But whenever you go to the on that cell, you can be directly split that cell. Select the table, split from the menu bar. Select how to split the cell. A cell can be split either horizontally to create a more rows or vertically to create more columns. आपको स्प्लिट किस तरह से करना है, रो करना है, कॉलम करना है, वर्टिकल करना है, हॉरिजॉन्टल करना है, डिपेंड ऑन यू. कितने में डिवाइड करना है, 1 columns, 2 columns, then 1 rows, 2 rows, number of rows and columns you can also select for the splitting and merging cells. So let's see the example for that. Here I'll open the Microsoft Word as I told you about the problem. Firstly, I am going to insert the table. Same thing you can do whatever you are doing in the OpenOffice site. The same thing you can do here. Firstly, I will increase the size of day 8:45, 9:30, and last I'm writing here the 10:50. Then day, Monday, then English, Monday, Tuesday, EBS,
Hindi plus Wednesday. Then you can write here again as English. So I create a one table here. Now you can split and merge the table. You can, whenever you do the right click, sorry, firstly you have to select the two rows or the column. For example, I'm selecting these two rows, these two columns, and do the right click so you can see the option here, the merge cell. So it will be merging. You can see here there is a no line. This is called a one column. There are only four columns now. That is one for the day, Monday, Tuesday, and the fourth one is for the Wednesday, Thursday. That is written here. There is a one box only you can see here in place of two. पहले दो line थी, दोनों के बीच में one line थी. That is now removed because we are merging the cell. Again, I am showing you that. Otherwise, in the open office, what should you have to do? Here on the menu bar, there is option of the table. You have to go to the table. Go to there is option of merging also and splitting also. You have to do with use of the table menu. Right click, merge cell. So it is merging. Understood everyone how to do the merging? Next. Yes, ma'am. Okay, very good. Now, I'm again selecting the table as I have to do the splitting. So that's why again I'm selecting the table and on the layout for the Google Microsoft Word. For the Open Office Writer, you have to go to the same menu, table. You have to go to the menu bar, table option, click on the split cell. Whenever you click on that one, it will be asked how many columns you want, how many rows you want. You have to write down the number of cell, you have to write down the number of columns, you have to write down the number of rows and click OK. So depending on the number of column and row, it will be show you the output. Again, I will be doing. First select this one, click on the split cell. You can see the number of column means a vertical. And second is the number of rows, that is a horizontal. If you are click here, do the 2, 3, and here we will be do the 2, so it will be divide like that. You can see here down. आपको किस तरह से स्प्लिटिंग करनी है, मर्जिंग करनी है, वो आपके ऊपर डिपेंड है. स्प्लिटिंग में आपको थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा, कॉलम किसे कहते हैं, रो किसे कहते हैं. अगर मैं कॉलम नंबर ऑफ 2 लिख रही हूँ तो वो किस तरह से डिवाइड होकर मुझे डिस्प्ले होगा. Again, I will do that. First, select that one or go to that cell. Click on the split cell. Select the number of columns. Select the number of rows and click OK. It will be divided by like that. So it will be divided. You can see here. I will be remove the Thursday here. Okay, so this is a way that how can you split and merge the cell. First, I am doing the option of here merging. That's why it's easy for you to show that how you will be merging and selling. And select the Wednesday here and do the splitting. Number of columns and number of rows it will be. So it will be divided like this. तो आपको पता चल जाएगा कि ये किसका है. You can do the merging on the splitting cell also. अगर आपने cells को split किया है तो आप उसको merge भी कर सकते हो. For example, I am selecting this one and we will be merged. So you can see here it will be merged over here.
So this is the way of splitting and merging. Now, next topic is, anyone have a query in the splitting and merging? No, ma'am. No, ma'am. No, ma'am. Okay, so now we are going for the Yes, next ma'am. one, changing the row height and width. Anyone can tell me what is the meaning of height? Height का मतलब क्या होता है? वर्ड तो आपने सुना होगा. आई एम नॉट आस्किंग अबाउट द टेबल, आई एम आस्किंग अबाउट यू. आप क्या जानते हो हाइट के बारे में? मैथ्स में तो पढ़ा होगा या फिर कहीं सुना होगा हाइट के बारे में. Height Ma'am, यस, वन Ma'am, लंबाई. Ma'am. is a good answer. Okay. लंबाई. लंबाई. Anything else? कितना लंबा है वो? कितना लंबा है वो? Ma'am, Length, you can say. The height of yours means how long you are, therefore that you are using the height. And what is the meaning of width? Ma'am. Ma'am? Ma'am, कोने. Huh? Corner. अरे हाँ. Ma'am, उसकी breadth. Width. Ma'am, उसकी breadth. Width. In a Hindi language you can say चौड़ाई. उसकी चौड़ाई कितनी रहेगी वो डिसाइड करना. Okay, so what is the meaning of the height and width? You already know, but आपको पता है लेकिन आप उसको समझा नहीं पा रहे हो. I can see that all the students are know about the height and width, but they cannot be expressed. So everyone knows about that. What is the meaning of height and what is the meaning of width? Firstly, we have to be see the row height and column width. We can change the row height. अगर आपको ये रो की हाइट छोटी लगती है, you can increase it, you can decrease it also. First, there are the two methods of the change the row height and column width. First is the using the mouse pointer. What should you have to do? You have to be take your cursor on the line that you can see in the table. आप टेबल में देख सकते हो lines, black color की lines जो borders आती है by default. You have to be go in that. Place the mouse pointer on the edge or the border. When the cursor changes to the double-handed arrow, this is called the double-handed arrow. Remember this one. This is called the double-handed arrow. आपको symbol इसका पूछ सकते हैं, वो double-handed arrow किसे कहते हैं? Press and drag the mouse button on the border to get the required width or height. So let's see the first method. So here is my table. So what should you do written there? You have to go to the border. You can see whenever I go to the border, there is a double-headed arrow is there. Yeah. So whenever you click on that, you can drag it like this if you want increasing or decreasing. अगर आपका डबल हेडेड एरो नहीं आता है और आप अपने माउस को मूव कर रहे हो, your height will be not changed. Remember that thing. Same process will be follow for the row also. You can see here increasing, decreasing, whatever you want. Sometimes what happen, your length of the text is more than the height and width of the row and column. So that time you will be use the changing the row height. Okay, let's see the second method. That is on the OpenOffice directly menu will be there. Select the table on the menu bar. Click on the autofit from the menu bar offers from resizing option. अगर आप ऑटोफिट पे क्लिक करते हो तो वो डायरेक्टली क्या हो जाएगा, टेबल पूरा टेक्स्ट के अकॉर्डिंग एडजस्ट हो जाएगा. First is the optimal column width or the optimal row height option. Make the columns or row as narrow as possible while still fitting their contents. कितना narrow हो सकता है वो अपने आप करने की ट्राई करेगा. You have to remember what is the use of the optimal column width and optimal row height.
I told to everyone क्योंकि ये दोनों जो है उसमें कंफ्यूजन होता है ऑप्टिमल और डिस्ट्रीब्यूटेड. Optimal column width and optimal row height make the column or the rows as narrow as possible while still fitting their contains. तो क्या करेगा, जितना छोटा हो सके उतना छोटा होने की ट्राई करेगा and it will be fitted the contents also. It will be try to fit the content of the cell also. Second option is that you can see here the option optimal, all the columns and row in the table can given the same width or height using the distribute column evenly, distribute rows equally. You have to be remember the options. Which option is used for the equal height and width given, and which is used for the optimal means for the narrow as possible. Two options you have to remember. आप यहाँ पे देख सकते हो स्क्रीन में. Whenever you go to the auto fit, you can see the options here. For the column, whenever you click on the optimal column, it will be narrow as possible with the content, and optimal row height is possible the row the narrow as possible for the content. And secondly, you can see the third option, distribute columns evenly. मतलब सारे columns की जो width होगी सेम इक्वल हो जाएगी, and same for the distribute rows equally, the height of column is same. If I don't know that in the word is that option is available or not, but I'm going to select it. Sorry. Properties, you can see here the row column, it will be not option available in the Word. So you have to be go to the only in the OpenOffice Writer. There is an option of auto fit that will be contain auto fit window that is on the page size, and whenever you do the fixed column width, all the columns has a fixed size. सबकी इक्वल फिक्स साइज हो जाएगी. यहाँ पे ये जो कॉलम आपको दिखाया गया है उसकी साइज फिक्स नहीं हुई because it is a merged cell. That's why it will become the same size. Okay. Now, anyone have a doubt in the changing row height and column? Yes, No, ma'am. ma'am. Yes, ma'am. Yes. No, ma'am. Yes, yeah. No, What ma'am. is your query? Ma'am, वो changing the row height and column width कैसे करें? एक बार फिर से दिखाओ ना. With using of this double-headed arrow? Yes, ma'am. Okay, so this is your table. You can see here. These are the borders. Everyone knows about the border now. What is the meaning of border? The black line Yes, you can ma'am. see that is a border. Whenever you go to the border, any side, आप कोई भी साइज पे जाओगे बॉर्डर की, आप देख सकते हो वहां पे डबल हेडेड एरो आ जाएगा. Whenever the double headed arrow is there, drag your mouse on the left or right to increase or decrease the size. आपको इंक्रीज करना है, डिक्रीज करना है, क्या करना है वो आपके ऊपर डिपेंड है. अभी मुझे डिक्रीज करना है तो मैंने उसको लेफ्ट साइड पे ड्रैग किया, सो इट इज डिक्रीज्ड. फॉर द कॉलम, फॉर द रो you have to be go to the row line. For the increasing and decreasing you have to go or the down, go to the up or the down. Using of up or down you can change the row height. आपको क्या करना है, इंक्रीज करनी है, डिक्रीज करनी है, डिपेंड ऑन यू विच टाइप यू वांट टू डू. अंडरस्टूड नाउ? बट मैम मेरा होता नहीं है जैसे मोबाइल में नहीं होगा, कोई बात नहीं. आप प्रैक्टिकल देख लो. आपको अब जब प्रैक्टिकल एग्जाम होगी तब आपको हाइट का प्रैक्टिकल नहीं दिया जाएगा. हाँ मैम मुझे इस पूरे में कुछ ऐसे पता नहीं चला इतना. पहल पहले अपना कैमरा ऑन करो. मैम मुझे एक बार समझ नहीं आई. एक मिनट. हाँ, यक्ष एक मिनट. यस पहल, पहले हम उसकी क्वेरी सॉल्व कर देते मुझे हैं. पूरे में ऐसा कुछ समझ नहीं आया. मैं इसमें समझ में नहीं आया. मैम
विथ में और वो लेंथ में कुछ समझ में नहीं आया कि आपने विथ और लेंथ कैसे किया। Width or length, rows width. It's a width हाँ, and रो और height. कॉलम में, रो और कॉलम में, सॉरी मैम। In second method, this one No. or this one. फर्स्ट मेथड में तो हमें सिर्फ उधर एरो रख के ही करना है ना। हाँ, फर्स्ट मेथड में आपको आपका कर्सर मूव करना पड़ेगा। यू हैव टू यूज योर माउस एंड यू हैव टू गो टू द बॉर्डर। जब आपका डबल हेडेड एरो आ जाएगा तब आपको उसको अप डाउन फॉर द रो, और जब आप अप डाउन करते हो तो रो की हाइट विड्थ चेंज होती है। आपको दिख रहा है? जब आप रो की लाइन पे क्लिक करते हो तो रो की हाइट चेंज होती है। जब आप कॉलम की लाइन पे जा रहे हो तो कॉलम की विड्थ चेंज होती है। यू कैन सी हियर लाइक दिस। मैम यस, और सेकंड मेथड में कैसा था? यस पवन। सेकंड मेथड में देखो, अभी मैं एक चीज बता रही हूँ आपको। सेकंड मेथड के लिए हमें ओपन ऑफिस राइटर के ऑप्शंस नहीं मिलेंगे यहाँ पे। वी आर जस्ट have only 2 options available here, as you can see here. Please mute yourself. Okay, in the layout, you can see the auto fit options here available. Using of that, in the OpenOffice Writer, there are the 6 options available. You can see on here. आप यहाँ पे देख सकते हो कितने options available. 7 options are there. Optimal का मतलब क्या होगा? वो अपनी size को narrow कर देगी according to the text. ऐसा नहीं कि वो इतना सा छोटा हो जाएगा। अकॉर्डिंग टू द टेक्स्ट, आपने 4 कैरेक्टर्स लिखा है तो वो 4 कैरेक्टर के अकॉर्डिंग रो या कॉलम की हाइट विड्थ चेंज करेगा। यस, तो मैम हमारे जो हमने जो ओपन आपने आपके पास जो अभी ओपन ऑफिस राइटर हम प्रैक्टिकल आप जिसमें करवा रहे हो तो उसमें ओपन ऑफिस राइटर वो नहीं है सेकंड मेथड का? नहीं है। Open Office Writer, one thing remember, we are in the previous years and years only using the Microsoft Word and all the Microsoft application. Open Office Writer is a copy of Microsoft. It's a one-off copy by Microsoft, but it have advanced and more advanced and attractive features compared to the Microsoft. That's why nowadays OpenOffice is now very useful because it's have a more options, more formats compared to all the Microsoft applications. By default आपके फोन जब आप लैपटॉप लेते हो तो उसमें Microsoft by default डाउनलोड रहता ही है because previous 2 years it will be using only the Microsoft. OpenOffice उसमें by default डाउनलोड इसलिए नहीं होता। हाँ मैम बोलो। आपने ये एरो वाली डबल एरो वाली मेथड करा है, उसमें आप जो अप डाउन करते हो तो हाइट आप जब छोटी करते हो तो उतनी हाइट कैसे हो जाती है? वो तो आपको करनी है। आपको लगे कि इतनी हाइट रखनी है देन यू हैव टू ड्रॉप इट। आपको छोड़ देना उस टाइम पे। ओके मैम मेरे पास माइक्रोसॉफ्ट है तो मैं सिर्फ ये वाला माइक्रोसॉफ्ट में करूँ? हाँ कर सकते हो क्योंकि आपका मोबाइल फोन में ये नहीं होगा क्योंकि आप जब अपने फिंगर्स का यूज करते हो तो पॉसिबिलिटी नहीं होती है कि आपको डबल हेडेड एरो आए, और आता होगा तब भी आपको फिंगर्स की वजह से दिख नहीं रहा होगा। मैम डबल हेडेड एरो आता है लेकिन वो उसका वर्क नहीं करता। वर्क नहीं करता? एक्सक्यूज मी मैम, टैबलेट पे वर्क करेगा? टैबलेट पे आएगा वर्क करेगा? हाँ हाँ करेगा। टैबलेट पे एक्सक्यूज होगा। मी मैम। या शारिया? यस मैम, ऐसे करना है। शौर्या आप
वर्ड क्यों यूज कर रहे हो? मैंने आज बोला तुम अभी इसमें डाउनलोड नहीं हो रहा, इसलिए मैं वर्ड में दिखा रही हूँ, तो आप वर्ड डाउनलोड नहीं करोगे, आपको सिर्फ ओपन ऑफिस में ही करना है। ओके मैम। क्योंकि ओपन ऑफिस इतने ऑप्शंस अवेलेबल नहीं रहते हैं वर्ड में। एक्सक्यूज मी मैम, यस। मैम वो ऐप का नाम क्या है? हाँ, वो हम जिसमें प्रैक्टिकल कर ओपन सकते हैं। ऑफिस, ओपन ऑफिस राइटर। ओपन ऑफिस। चैप्टर का नाम ही है हमारा ओपन ऑफिस। Okay, so as we don't have a open office writer, we will be go with this properties, page property, क्योंकि उसके लिए हमें पूरा देखना पड़ेगा, क्योंकि व्यू जो होता है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का ओपन ऑफिस राइटर का, both have the difference. So for the next topic, I will be take the next class. Next class में ही मैं सिखाऊंगी। अभी इसको समझना ही है, तो we will be show on the next class the properties of page. There are the 3-4 properties that we will be learned in the next class on the Thursday. Okay, now anyone have a query regarding? No, ma'am.